Okay, thank you. So the recording has started. Good evening, everyone, once again. And today we are going to continue with our control system subject, and the topic is RH criteria. That is Routh-Hurwitz criteria, which is used to check the stability of the system, right? So RH criteria gives stability of this system, but this stability is absolute stability. That means we only get the answer whether the system is stable or not. Okay, we don't know how much system is stable. So for that we use other methods, but before that we are going to uh, take few of the examples from RH criteria. So I think I have just given you a faint idea in the last class how we do it. So we'll practice some examples so that you get clear idea. Okay, so there are two or three types of examples that might be asked from RH criteria, and trust me guys, if this question comes for an mark, it won't be for 2 marks, it will be for 1 mark. So you are going to get that mark because these type of questions are not that hard. Okay, so let me just take few blank pages so that we can continue and present my screen. All right. Uh, yeah, I hope the screen is visible, right? Visible, everyone? I hope yes. Okay. So just leave the first page blank. I'll put the heading over there. Uh, so I'm going to give you one example or one question that you need to solve, and you need to tell me whether this system is stable or unstable. Okay, and for that system we have transfer function. Transfer function is 1 upon s raised to 4 minus 4s cube minus 7s square plus 22s plus 24. So use RH criteria to find out whether this system is stable or unstable. If it is unstable, why it is unstable? How many poles are on the right half of the graph? So if you know the answer, if you know the procedure, how we proceed, you can go ahead, or else I'll solve it. Okay. Okay, so I'm solving it. So first of all, we have to check whether all the terms are present or not. So s raised to 4 is present, 4s cube is present, s square term is present, 22s is present, and the constant term is also present. So we make their groups. So this is the 1, 2, and 3, and these will be two separate groups, right? So let me just. Okay, somebody has given some answer. Okay, Raman says it's unstable system. Okay, let's check it. So first of all, we have to make one column in which we write it like s raised to 4, s cube, s square, s raised to 1, no need to write, and s raised to 0. So write all the even terms here. So coefficient of s square is 1. I'll write it here. Then coefficient of s square is minus 7. So it should be here. And the constant term, that is, it should be here. Now minus 4 will be here and 22 will be here. So here we don't have any element. We can put 0. Okay, so I hope you know this, how we put this. Okay, after that, what we do, minus 4 into minus 7. So that becomes, I think, 28, right? So 28 minus 22 divided by minus 4. So what it is? Can anybody calculate? So it is basically, I think, minus, sorry, plus 6 by minus 4, right? Plus 6 by minus 4. So it should be minus 1.5. Minus 1.5 should be there. So it would be minus 1.5. I hope you understand why I write this 1.5 here. Okay. So this into this into this, minus this into this, divided by this.
Okay, similarly, now this into this multiplied with this into this. So 22 multiplied by 24 minus 0 divided by 22. So it should be 24 only, right? See, 22 into 24 minus 0 divided by 22. So 22 gets cancelled, 24 will be there, so 24 is here, right? Now multiply these two, and uh, you can get the value for here. Okay, so can you calculate the value here? What can be the value here? 24 fours, I think 96, minus 96 is there, and okay, minus 96, so minus minus it would become plus, and 22 multiplied by 1.5, so I guess it is minus 33. Minus 33 divided by again 1.5. So 96 minus 33 is, I guess, 36, sorry, 63. So it would be 63 by 1.5. So we don't need to calculate a precise value. Okay, मतलब यहाँ पे अभी 63 को हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करते बैठने की जरूरत नहीं है, because we are only interested in sign. We are not interested in value. Okay, sign either पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वही हमें चेक करना है. एंड लास्टली, लास्ट का जो एलिमेंट होता है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, या फिर लास्ट का जो एलिमेंट यहाँ पे 24 है वही है जो कि हम एज इट इज लिख सकते हैं. कैलकुलेट भी अगर करना है हमें, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस 0 डिवाइड बाय दिस, यानी कि यही आने वाला है, राइट? सो नाउ चेक इन द फर्स्ट कॉलम. In the first column, how many sign changes are there? So one sign change is here. That means it was positive and it became negative. Now one sign change happened. Okay, somebody has put something. Okay, oh, all right, two zeros. So two poles are on the right half, right? So two sign changes are here. Negative, 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 and again it became positive, right? So one sign changes here, another sign changes here. So there are number of poles on the right half is equals to 2. So the system is unstable. Even if a single pole is on the right side or right part of the graph, then also the system is unstable. We know that, right? So let's take another type of example. It was the simplest one, I guess. Okay, so just a second. Let me give you the example. So C of S upon R of S is equals to 1 upon S plus 1, S plus 2, and S square plus 1. So can you solve this? Can you try it? So first of all, what we have to do, we have to make this denominator in a proper form, or we can say in index form, right? So after that we can proceed with the example. So try to get the denominator in the proper form. So you have to multiply s plus 1 with s plus 2 and s plus sorry, s square plus 1. Okay, so I hope you are doing it with me. So I'll be also doing. So s into s is s square plus 2s, s into 1 is s, and 2 into 1 is 2. So multiplied with s square plus 1. Then we have see, this is s square, 2s plus s is 3, 3 plus 2, sorry, it won't be added. So s square into s square is s raised to 4. Now s square into 1 is s square. Then 2s into s square is 2s cube. 2s into 1 is 2s. Again, sorry, it should be 3s, 3s cube, and again 3s. Then we have plus 2s square plus 2. Now you can add these. S raised to 4 is as it is. This s square will be get added with this 2s square, so it becomes 3s square plus 3s cube plus 3s plus 2. Now we need to interchange the position of these two elements. So s raised to 4 plus 3s cube plus 3s square plus 3s plus 2. So this is the required denominator we need, right? So from here on, you can continue and try to find out whether the system is stable or unstable.
Please give it a try for a minute or two, and if you stuck somewhere, let me know. Okay, please try it. Stuck at last step. Okay, 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 no problem. It happens. So there is one zero coming, right? Zero is coming there, Raman. Yeah, that's what. Okay, what about you, Shubham? Do you understand? शुभम समझ में आ रहा है ना? जर समजत नसेल शुभम तर सांग, आपण थोडंसं रिपीट करूयात, नो प्रॉब्लेम. ओके, बिकॉज सी आपण म्हणतो ना की सॉरी रमन, आय एम सो सॉरी, लाईक I speak in Marathi sometimes. Okay, I'm so sorry for that. Raman don't understand Marathi, I guess. So I need to either speak in English or Hindi. Sorry. So these are very easy examples. Okay, don't miss out on this. Don't miss out on this at all. These are going to give you marks 100%. Okay, so that's why if you don't understand, tell me, I'll repeat the thing. Okay, no problem. So you are stuck at last step. So how do we proceed from that last step? We'll see. Okay, uh, so let me just draw the columns. S raised to 4, S cube, S square, S raised to 1, S raised to 0, and there is one line here. So coefficient of s raised to 4 is 1, coefficient of s square is 3, coefficient no coefficient, that's constant, so this is 2, again 3 3 0, right? So 3 into 3 is 9, 9 minus 3, that is 6, 6 by 3 is 2, so it should be 2 here. Now 3 into 2 is 6, 6 minus 0 divided by 3, again it is 2 here. Now 2 into 3 is 6, and minus 2 into 3 is 6, that is 0 here. Now you are stuck here, right? So how do we proceed from this? So to proceed from this, we have to find one auxiliary equation. Okay, so how do we find out auxiliary equation? Take this step. So see, this is s square. Okay, so we'll take auxiliary equation as 2s square plus 2 is equals to 0. Okay, so we have taken auxiliary equation. This equation is called as auxiliary equation. Please note it down. Now we have to differentiate it. So after differentiating, we will be having 4s plus 0 is equals to 0, right ना? 2s square का जो differentiation है या फिर derivative है वो क्या आएगा? 4s plus 0 आएगा. Okay, Shubham says it is stable. We'll see it. 4s plus 0 आएगा. So this is the differentiation. Now this differentiated part, this equation can be used here. So 0 comma 4, and we are going to give a star here. So why this star is here? Because this value is obtained from the auxiliary equation. Okay, so this 0 will be again here, and the star will be there. Now last digit should be 2. Now we are done with our all the steps, right? So we have to now judge whether this system is stable or unstable. So if you observe, guys, in the fourth step we have got one 0. Okay, so can you tell me 0 is positive or negative? 0 is positive or negative? We don't know, like nobody knows, right? 0 is neither positive nor negative. So if we are talking about sign changes, then we cannot determine whether the sign has changed or not. Okay, now then you will see, then you will say, so why did you use that auxiliary equation and why did you find the value of 4? Because see, in this case it was second last step, but it might happen for you, you will get stuck in the third step. So you need this auxiliary equation. Okay, so that's why we have taken, although it is not useful here, but we need to take it to proceed further. Okay, तो इस तरीके से हमें वो auxiliary equation हमने सिर्फ उस किस चीज के लिए लिया? हमने सिर्फ उसी चीज के लिए लिया कि हमें एक वैल्यू चाहिए थी. वी आर नॉट गोइंग टू जज द साइन ऑफ इट. उसके साइन का, उसका साइन इतना मैटर नहीं करता है. ओके, सो दिस सिस्टम इज marginally stable. Whenever a 0 comes in the first column,
whenever a 0 comes in the first column, then that system is said to be marginally stable. So a 0 is here. Okay, so no sign change, although no sign change is there. So let us suppose 0 is there and one sign change is there. So in that case, the system will be stable or unstable? It would be obviously unstable because one sign change is there, apparent sign change is there, isn't it? So the system will be unstable. Good. Now, what is the thing that I wanted to tell you? Okay, so this system is marginally stable. Okay, that is being said now. Mm, okay, so see if you can observe this formula itself. So, what are the poles? What are the poles of this system? What are the poles? -1, -2, and s square plus 1. That means there is a pair of imaginary poles on the y-axis. Did you get it? S square plus 1. That means this is a pair of imaginary poles on the y-axis. आई होप यू कैन आई होप यू अंडरस्टैंड दिस की एस स्क्वायर प्लस 1 जो है, अगर हम एस स्क्वायर को -1 रखते हैं, सो एस की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? प्लस और माइनस जे. अंडर रूट ऑफ -1 इज जे ना, और आई, isn't it? Iota, whatever we say, but it is imaginary, right? So if there is any pole on the y-axis, so in that case also that system is said to be marginally stable, right? So there are two proofs that this system is marginally stable. Okay, so this is one type of example that may be asked. uh, okay, now next one, let me just write it for you. If a row becomes, okay, let me just find a good example for you. Okay, this example you can do. Okay, so we have one very interesting example. Now let us suppose there is one system and its gain is s cube plus 2s square plus 1. This is output c of s. This is input r of s, and there is unity negative feedback. Now we have to find out whether this complete system is stable or unstable. This is unity negative feedback. Yeah, I forgot to write negative here. So its transfer function is going to be closed loop transfer function. C of s divided by r of s is going to be k upon s cube plus 2s square plus 1 divided by 1 plus k upon s cube plus 2s square plus 1. Right. So if you simplify this, this s cube plus 2s square plus 1 will get multiplied with this 1, right? So s cube plus 2s square plus 1 plus k divided by this whole term. Now this whole term will get cancelled with this. So our transfer function will be something like this: k upon s cube plus 2s square plus 1 plus k, right? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक अगर समझ में आया तो मैं भी क्वेश्चन क्या है वो बताता हूँ आपको. Yes or no? Yes. Okay. Thank you, Shardul. Okay. Good. Now the question is, find the value of k. Find the value of k for which system is stable. Find the value of k for which system is stable. Now, can you try it? Please give it a try. I'll give you 1 or 2 minutes. Please give it a try. Try to find the value of k so that system remains stable. That means what? That means there isn't any sign change. Sign change nahi ho raha hai. Try it, please. Find the value of k for which system is stable.
Okay, k is greater than -1. For that, the system is stable. Okay, we'll check. We'll check. Please review your answer. आंसर चेक करो एक बार. या एक बार चेक करो. शुभम तुम भी चेक करो. शार्दुल यू आल्सो ट्राई. Okay, done with your trials. Okay, let's check. Shall I proceed? Okay, for value of k is equals to 1, system is stable. Is that what you want to say? Right? And for any other values, the system is unstable. See, okay. Let's check. Shubham, do you have any answer? If not, then I can proceed. Okay, so see. So here we have this term and this term. So this complete term will be considered as a constant. Right? 1 plus k will be considered as a constant, and this is the second term, we can say. So s cube, s square, s raised to 1, and lastly we have s raised to 0. Just a second. Okay, so here it should be 1. Then we don't have term of s, so that's why we are going to take 0 here. Then we have 2 here, and lastly we have 1 plus k. I hope you are with me till this. बराबर ना, मतलब ये यहाँ तक जो मैंने लिखा, you agree with this? Any questions? Why I write that 0? वो 0 मैंने क्यों लिखा? किसी को कोई क्वेश्चन इस बारे में? नहीं ना? Because we don't have s term. हमें वो करना होता है ना कि odd terms के जो coefficients है वो हम ऊपर लिखेंगे. उसके बाद में जो इवन टर्म्स के जो इवन पावर्स के जो कोएफिशिएंट्स है वो हम सेकेंड रो में लिखते हैं. सो एस क्यूब के साथ में एस रेस टू 1 का कोएफिशिएंट आएगा, लेकिन एस रेस टू 1 यहाँ पे हमारे इसमें नहीं है, इक्वेशन में है ही नहीं ना. एस क्यूब है, एस स्क्वायर है और डायरेक्टली कांस्टेंट है, एस की टर्म ही नहीं है. सो वी टेक इट एज अ 0s, तो उसका कोएफिशिएंट जो है वो 0 आ जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. देन एस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट, या ऑल राइट, सो एस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 2 ले लिया हमने, और जो कांस्टेंट टर्म था वो 1 प्लस के ले लिया. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अभी क्या करना है? 2 into 0 यानी कि 0 हो गया, एंड 1 plus k into 1, so it is nothing but 1 plus k and divided by 2. राइट, सो ये क्या हुआ? -1 plus k divided by 2. सो ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1 plus k divided by 2, और हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है. 1 plus k हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं. लास्ट वैल्यू, राइट. सो अभी आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे? लेट अस सपोज पहला आंसर जो था कि रमन ने निकाला था ना पहला आंसर, रमन सी, यू फाउंड आउट वैल्यू ऑफ के विच इज ग्रेटर देन -1. सो लेट अस सपोज वी टेक वैल्यू ऑफ के एज 0. इज दैट ओके? के की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं. ओके, यू डोंट मिस्टेक. ओके, नो प्रॉब्लम. सो वी जस्ट टेक ट्रायल. ओके, हम ट्रायल लेते हैं कि के की वैल्यू हम नेगेटिव रखते हैं, सॉरी के की वैल्यू हम 0 रखते हैं. सो के की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, सो देयर इज अ साइन चेंज इन द थर्ड रो, राइट. मतलब वहां पे -1/2 हो जाएगा ना, और नीचे 1 हो जाएगा फोर्थ रो में, बराबर. सो देयर इज वन साइन चेंज. नाउ लेट अस सपोज के की वैल्यू हम रखते हैं -2.
k की वैल्यू हमने -2 रख दी। सो 1 - 2 इज -1, -1 मतलब कि +1/2 बन जाएगा। कहां पे? थर्ड रो में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? k की वैल्यू अगर मैं -2 रखता हूं तो थर्ड रो में जो हमारी वैल्यू है ना वो +1/2 बन जाएगी। डू यू एग्री विथ मी? यस। यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन मतलब थर्ड रो तक तो कोई साइन चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम फोर्थ रो में आते हैं तो फोर्थ रो में क्या बन जाएगी वैल्यू? फोर्थ रो में वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर के की वैल्यू हम -2 रख रहे हैं तो फोर्थ रो में वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। सो दैट -1 ना, तो मतलब माइनस आया। सो अभी -2 से छोटी ही कहूंगा मैं, या -2 से छोटी अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, -5 रखते हैं, अगेन सेम प्रॉब्लम इज देयर, राइट? डिनोमिनेटर थर्ड रो में तो पॉजिटिव आ जाएगा लेकिन फोर्थ रो में नेगेटिव आ जाएगा। नाउ विल डू वन थिंग, हमने जीरो पुट करके देख लिया, माइनस वैल्यूज हमने पुट अप करके देख ली, अभी हम पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं। सो पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रखो, मतलब लेट अस सपोज you put k is equals to 10. So in the third row 1 plus 10 is 11, so -11/2 will be there, right? So again sign change is there. Just a second, students. I'm so sorry for the disturbance, but k की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी साइन चेंज है, k की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी साइन चेंज है, और k की जीरो वैल्यू के लिए भी साइन चेंज है। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इज सिंपल, सिस्टम कैन नेवर बी स्टेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। सिस्टम इज नेवर स्टेबल। बट आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, लाइक यू विल बी हैविंग फोर ऑप्शन, सो उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको यह एक ऑप्शन मिल जाए कि k इज द एलिमेंट ऑफ 5, मतलब k की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, नल, जीरो। Okay, so this can be the option. I hope you understand this. Clear, guys? If it is clear, then we can take a similar new example. Next one. Okay, fine. Thank you. Thank you for confirming. Shubham, clear? Okay, Shubham, clear. Raman, Shardul, all of you are clear. Good. Okay, now I'm going to give you one example. You try it, please. You try it, and you tell me what are the values for which the system will be stable, unstable, and blah blah blah. Okay. And just a second, let me just draw it. So this is R of S. This is the main part, that is K divided by S cube plus 2S square plus 3S plus 2. And here we have C of S, and then we have a negative unity feedback. This is R of S. So C of S divided by R of S निकाल लो, और उसके लिए RH criteria apply करो, and tell me what are the values of K for which system is stable. You try on your own notebook. I'll try solving here. Okay. If you say I can be on mute while solving so that I won't disturb you. Okay. So simply C of S upon R of S will be equal to K upon S cube plus 2S square plus 3S plus 2 plus K. So यही होने वाला है. Okay, Raman has some value that for k is equals to okay, k for k is greater than -2,
and k is less than 4, the system is stable. Okay, good one. Good one. We'll verify it. Don't worry, everyone. We'll verify it. Raman, do one thing. Please go through all the rows. जितने भी तुम्हारे रोज बने हैं ना, सिर्फ मतलब पहले कॉलम में चेक करो कि मे बी कहीं पे और साइन चेंज हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है, सो योर आंसर माइट स्लाइटली चेंज। ऐसा कुछ अगर होता है सो या प्लीज गो थ्रू इट वंस अगेन। Shubham and Shardul, it's absolutely fine if you take time to solve the example. No problem at all. ओके, गेट एग्जाम में हमें 3 से 4 मिनट मिलते हैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। टेक योर टाइम, प्लीज डोंट मेक मिस्टेक्स, डू इट। So have any one of you applied for the BARC recruitment? Anyone has any idea? Okay, Shardul has some answer, that is for k is smaller than 0 and k is greater than 4, it is stable. Okay, we'll see. Okay, fine. So Shubham, I hope you will be halfway in the process. Okay, so stop there. I'll be solving. So let's go ahead. S cube, s square, s raised to 1, s raised to 0. So 1, 3, 2, 2 plus k. So 2 into 3 is 6 minus 2 minus k divided by 2. Right. So it would be, I guess, it, it would be 3 minus k plus 2 by 2. ओके, सो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे लिखूंगा। सो 3 माइनस k प्लस 2 या फिर 2 प्लस के वट एवर डिवाइड बाय 2, एंड ये जो है यहाँ पे तो जीरो ही आने वाला है, और जो लास्ट का जो टर्म है वो हमारा 2 प्लस के ही रहेगा। ओके, नाउ ट्राई पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू 0 रखो। सो 0 जब हम रखेंगे, सो जो थर्ड रो है, this row will be 0 plus 2 is 2, 2 by 2 is 1, and 3 minus 1 is 2, and 2 plus 0 is 2. So no sign change. That means for k is equals to 0, system is stable. Okay, so now we'll try increasing the values of k. तो k की वैल्यू मान लीजिए हम रखते हैं k is equals to 2 रखते हैं। so k is equals to 2 जब हम रखेंगे, so k 2 plus 2 is 4, 2 plus 2 is 4, divide by 2, that is again 2. So 3 minus 2 is 1, and 2 plus 2 4, that means it is again for k is equals to 2 also it is stable। k is equals to 2 के लिए भी stable ही है। Now put k is equals to 5 and let us see what happens, or k is equals to 6 for an instance, k is equals to 6. So 6 plus 2 is 8, 8 divided by 2 is 4, so it is becoming minus. That means for k is equals to 6 it is unstable. That means there is a margin between k is equals to 2 and k is equals to 6. So let us suppose k is equals to 4 now. So 4 plus 2 is 6, 6 divided by 2, that is 4. So 3 minus, sorry, yeah, 4 plus 2 is 6, 6 divided by 2 is 3, 3 minus 3 is 0. That means for k is equals to 4, system will be what?
k इज इक्वल्स टू 4 के लिए सिस्टम क्या रहेगी? स्टेबल, अनस्टेबल, मार्जिनली स्टेबल रहेगी, बिकॉज थर्ड रो इज बिकमिंग जीरो हियर. k इज इक्वल्स टू 4 के लिए गाइज, k इज इक्वल्स टू 4 के लिए system will be marginally stable. I hope you get it right. So let me just write it here. For k is equals to, for k is equals to 4, marginally stable. ओके. और के मतलब 4 से अगर आप आगे की वैल्यू रखोगे ना, तो तब तो फिर मतलब सिस्टम अनस्टेबल ही है, तो नो पॉइंट इन गोइंग अहेड. अभी हम नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं. सो पुट -2. -2, -2 is 0. 0 by 2 is 0. So that means no sign change. -2, 0. So yeah, it is again becoming I think marginally stable for k is equals to -2, isn't it? K is equals to -2 के लिए भी marginally stable system हो रही है. Do you agree with this? Now put k is equals to uh, minus -4. So -4 plus 2, that is -2. -2 divided by 2 is -1. Minus is plus. So 3 plus 1 is 4. That is positive. But here it would be negative. That means it is unstable. So yeah. So what is the range, students? What is the range? Range should be, I guess, k should not be greater than 4 and k should not be less than -2. So is this the range? Is this the range for system to be stable? Right. Now, sometime same got. Okay, good. ठीक. Okay, so initially you got this. Key is all right. Yeah, yeah, Raman, you got right. Okay. Now a question might be asked. So let us suppose this question is given to you, and they won't ask you to find out the value of k for which system is stable. Instead, they will ask you to find the frequency of sustained oscillations. Frequency of sustained oscillations. So in this case, how you gonna proceed with this? Okay, please note it down. अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो तो. So sustained oscillations means what? Sustained oscillations means when system is guys, are you hearing any kind of background noise? Because the doggos are like uh, barking outside. I hope there is no any kind of disturbance, or is it there? No, all right, okay, okay, fine. So let's continue. So क्या कह रहा था मैं कि let us suppose क्वेश्चन पूछा जाता है कि find the frequency of sustained oscillations. So in this case, how do you find out frequency of sustained oscillations? So sustained oscillations means system जो है वो marginally stable है, तभी वो sustained oscillations देगी, बराबर ना? Either it will be underdamped or overdamped for stable and unstable conditions. But when it is marginally stable, it will give sustained oscillations. So हमें system marginally stable कब है? It is on either k is equals to -2 और k is equals to 4, राइट? k की इसी वैल्यू के लिए हमारी सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है. सो थर्ड रो जीरो कब हो रहा है? थर्ड रो जीरो तभी हो रहा है जब हम k की वैल्यू क्या रख रहे हैं? k की वैल्यू हम रख रहे हैं 4. See, in the third row, if I put k is equals to 4, 4 plus 2 is 6, 6 divided by 2 is 3. So 3 minus 3 is 0. So the entire row becomes 0. And that's where the system is unstable, sorry, marginally stable, right? So in this case, what we do, we take auxiliary equation of the auxiliary equation of what? Of the previous रो ना. देखो यहाँ पे सी, अगर ये रो मेरा जीरो हो रहा है, ये रो मेरा जीरो हो रहा है, तो मैं वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से लूंगा ना. सो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर मुझे लेना है, तो मैं लूंगा एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0, बराबर ना? अभी के की वैल्यू क्या रखनी है मुझे यहाँ पे? सिस्टम मार्जिनल स्टेबल अगर होनी है तो के की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी 4. सो एस स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हुआ. देन एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हुआ? माइनस, या सॉरी, इट शुड बी 2s स्क्वायर ना. यहाँ पे 2 है ना, सो 2s स्क्वायर
2s² इज इक्वल्स टू हुआ -6, सो s² इज इक्वल्स टू हुआ -3, right? So s will be equal to plus or minus under root of 3 and I j whatever you say, right? Am I right till this? यहाँ तक सही है मैंने जो लिखा? एनी डाउट टिल दिस कि s की वैल्यू हमें प्लस और माइनस अंडर रूट 3j कैसे मिली? नो डाउट। हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस निकालनी थी, तो इसके लिए मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन को मॉडिफाई करके मैंने s की वैल्यू निकाली। I hope it is clear till this. लेकिन we know that कि s की वैल्यू s is equals to what? S is equals to actually sigma plus j omega, right? But for this instant, or if in like we can say control system, we don't give a damn to this sigma. We just, yeah, we give damn to this sigma, but here we are considering s is equals to j omega only. ठीक है, s की वैल्यू हम क्या पकड़ रहे हैं? j omega only पकड़ रहे हैं। सो s की वैल्यू अगर j ओमेगा है और s की वैल्यू प्लस और माइनस अंडर रूट 3 j है, तो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ s, सॉरी, ओमेगा? ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा की वैल्यू होगी अंडर रूट 3 प्लस और माइनस अंडर रूट 3, and omega is nothing but the frequency. Omega is nothing but the frequency. Frequency can never be negative, so that's why omega will be under root 3, राइट? सो ओमेगा विल बी अंडर रूट 3। तो अगर आपको रेडियन में पूछा है, सो दिस इज रेडियन पर सेकंड, तो आप ये लिख सकते हो। अगर आपको हर्ट्ज में पूछा है, लेट अस सपोज दे आर आस्किंग अबाउट हर्ट्ज, सो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, that is equals to under root of 3, so f will be equal to under root of 3 by 2 pi, so hertz. So this is the frequency of sustained oscillations. I hope it is clear. तो हमने जितने भी कुछ पॉसिबिलिटीज थे यहाँ पे आर एच क्राइटेरिया पे क्वेश्चन सवाल पूछे जाने के, सो मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल ऑफ देम, सो दैट आपका एक मार्क जो है वो तो एटलीस्ट सिक्योर हो जाएगा। एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट माइट नॉट बी आस्क, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस वाला पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू गेट इनटू अदर टू टाइप्स। सो गाइस प्लीज रिमेंबर वन थिंग, आप अगर ये 2-3 टॉपिक अच्छे से कर लेते हो ना, आपके 2 से 3 मार्क फिक्स हो जाते हैं, बिकॉज ये ऐसे टॉपिक्स हैं इन पे क्वेश्चन आता है, मतलब आता ही है। मैंने जितने एग्जाम पेपर देखे सब में इस पे क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज नाइक्विस्ट प्लॉट। So before Nyquist plot, before we draw Nyquist plot, we need to understand what is polar plot. तो जब हम polar plot draw करेंगे, उसके बाद हम Nyquist plot draw कर सकते हैं बहुत आसानी से। And after that we are going to go into the calculations and the stability of system and all. Okay, so यहाँ पे आपको सिर्फ एक मैं फेंट आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम we are going to deal with polar plots and Nyquist plots. So polar plots और Nyquist plots जो है वो next class में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। So let me just start with it. Okay, so यहाँ पे मैं थोड़ा सी जगह छोड़ देता हूँ हेडिंग के लिए, and we have, so one more thing, when we use, okay, let me just type it, sorry, if it is taking time. Okay, so yeah, polar plots and Nyquist plots. So here in polar plots and Nyquist plots, we find stability of closed loop system, closed loop system with the help of, with the help of open loop transfer function. ओके, सो जो हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं वो क्लोज लूप सिस्टम की होती है, लेकिन उसके लिए हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज करते हैं।
Now let us suppose we have a very simple transfer function, that is g of s. क्वेश्चन 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, g of s into h of s is equals to 1 upon s plus 1. So this is the transfer function we have. Now इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमें एक सिंपल पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है. ओके, पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है. तो पोलर प्लॉट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? दो क्वांटिटीज की जरूरत होती है. पहली क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड, सेकंड क्वांटिटी इज एंगल. ओके, सो वी नो दैट एक एस की जो वैल्यू है तो जे ओमेगा है. सो पुट एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा. सो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है इट विल लुक लाइक जे ओमेगा प्लस 1. सो यू माइट बी नोइंग कि हम लिखते हैं ना एक्स प्लस आई वाई. सो इसी तरीके से यहाँ पे जे ओमेगा प्लस 1 लिखा है, तो इसे हम एक्चुअली कंसिडर करेंगे 1 प्लस जे ओमेगा. ओके, 1 प्लस जे ओमेगा. और जब हम लेट अस सपोज, नाउ दिस इज वेरी बिग टू राइट, लाइक जी ऑफ एस टू एच ऑफ एस मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सो मैं इसे एक्स कंसिडर करता हूँ. ठीक है, सो मुझे मॉड ऑफ एक्स निकालना है, मतलब इसका मॉड निकालना है. सो 1 का जो मॉड है वो रहेगा 1, और जो नीचे डिनोमिनेटर में मॉड रहेगा वो रहेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. सो आई होप आपको समझ में आ गया कि हम मॉड किस तरीके से निकालते हैं. यहाँ पे आपने सीखा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं. Alright, so this is how we find the modulus. We need magnitude, that is mod, and angle. तो angle के लिए what is the angle in any complex angle of complex number? If we represent a complex number in the form of polar form, then we need magnitude as well as angle. ठीक है ना? तो जब हम उसे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड तो हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? तो एंगल के लिए वी हैव फॉर्मूला, एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स ऑफ y by x. I hope you remember this. आपने कहीं पे इसे सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, राइट? माइनस tan इनवर्स ऑफ y by x. इस तरीके से हम एंगल फाइंड आउट करते हैं. डिड यू गेट टिल दिस? सो यहाँ पे हमारा y क्या है? y क्या है? y इज ओमेगा एंड x इज व्हाट? x इज 1, राइट? y इज ओमेगा एंड x इज 1. सो जस्ट रिमेंबर टिल दिस. यहीं तक याद रखना है कि हमें पहले मॉड्यूलस निकालना है, उसके बाद में एंगल निकालना है, एंड देन वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ. ओके, सो जो बाकी सब चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बड़े ही आराम से और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं. एंड डू वन थिंग एज योर होमवर्क मे बी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, थोड़ा सा उसका आइडिया लेके आओ कि हाउ वी कैलकुलेट एंगल एंड ऑल. सो ये सब चीजें कैसे वर्क करती है, सो ये सब आप एक बार देख के आना. ओके, बिकॉज आई कैन नॉट रिपीट दैट थिंग, एंड हमारा मैथमेटिक्स का क्लास अभी तक हुआ नहीं है. सो उस चैप्टर को एक बार देख के आना. ऑलराइट? So yeah, so thank you so much, guys, for your patience listening and for joining the class. Okay, so that's it for today, and I will meet you on Saturday 8:30 p.m. Okay, so bye bye, thank you, good night, and take care. You can leave the class. Yeah, bye.